इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक। Mac sauce all over Chelsea FC at Old Trafford. Manchester United 2, Chelsea 1. This was the prediction that I made in the preview as well. Uh, बहुत ज़बरदस्त match, and from the starting minute, I think it looked like Manchester United are here to play and win this match. What a response from the players, and they absolutely no बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ मतलब कि शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा लो थी जब हम इस मैच में जा रहे थे। सीइंग द प्रीवियस मैचेस अगेंस्ट न्यूकासल एंड गैलाटासराय वेयर जहाँ हमने लैग किया। तो इस मैच में जाने से पहले हमें ये था कि नो चेल्सी दे आर गेटिंग द रिदम बैक। दे ड्रू अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी 4-all, तो शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो। बट आई थिंक वी डोमिनेटेड चेल्सी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द गेम। और हम अब आगे रिव्यू करेंगे मैच का, लेकिन रिव्यू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, सो दैट यू कुड हेल्प अस। सो भाई चलते हैं मैच की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द स्टार्टिंग लाइनअप। मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग लाइनअप मोर और लेस वही थी जो हमने प्रीव्यू में भी बताई थी, जबकि हमने देखा शॉ वाज बैक टू लेफ्ट बैक, लिंडलॉफ स्टार्टेड at LCB, and Varane was missing, I think, due to some back injury or something. He was not in the squad, I think. Dalo started at right back, which I thought was a weak point defensively. But Dalo ने भी कल क्या गेम किया यार, he was really good going forward. उसका मसला यही है कि he lacks that defensive shield that Aaron Wan-Bissaka has. वहाँ थोड़ा लैग है। बाकी सेंटर ऑफ द मिडफील्ड हमने कहा जी माइनो स्टार्ट करे, लेकिन माइनो ने स्टार्ट नहीं किया, उसकी जगह मैकटोमिने ने ही स्टार्ट किया अलोंगसाइड अमराबाद, जिस पे भी हम आएंगे मैच के दौरान। देन वी हैड एंटनी ऑन द राइट विंग व्हिच वाज अ गुड डिसीजन, लेफ्ट विंग गार्नाचो, center Bruno and Højlund. So Rashford and Martial both were benched, and I think that was a brave, good decision from Erik Ten Hag. I would definitely back him with this starting 11. तो भाई मैच स्टार्ट होने से साथ ही हमें कुछ मिनटों के अंदर ही पेनल्टी मिल गई। एंटनी वाज फाउल्ड इन द पेनल्टी एरिया, और वो पेनल्टी ब्रूनो फर्नांडिस ने मिस कर दी। जब उसने मिस की वहां से लगा मतलब पेनल्टी भी कुछ खास इतनी नहीं थी, सेव भी अच्छी थी, बट पेनल्टी वाज नॉट एज पर ब्रूनो फर्नांडिस स्टैंडर्ड्स। जब आपका इतना लो ऑन कॉन्फिडेंस चल रहा हो इन फ्रंट ऑफ गोल, तो हो जाता है इस तरह से। सो आई थॉट दैट भाई बुरा दिन शायद स्टार्ट हो गया रात के 1 बजे मैच। और बट आई इट इट डेफिनेटली लुक लाइक के यूनाइटेड आर हियर टू प्ले, एंड वी वर क्रिएटिंग चांसेस आफ्टर चांसिंग। और भाई जो प्रेस था पहले 15-20 मिनट, आई थिंक चेल्सी वर नॉट रेडी फॉर दैट। एवरीवन वाज वर्किंग हार्ड, they were really fighting for the badge, and I think everyone was phenomenal, specifically our midfield, our defenders. I think they worked really hard, और साथ ही हमें उसका सिला मिला, and McTominay scored a very beautiful first goal, और I think that was really needed at that time as well. We wanted to take the lead, could have scored more till Chelsea equalized at half time. मेरा ख्याल है बहुत सारे चांसेस मिले, मैकटोमिनी के पास ही एक और बहुत प्यारा चांस था, ब्रूनो फर्नांडिस का क्रॉस था, मैकटोमिनी का हेडर, ही वाज बिल्कुल कोई उस पे कोई कवर नहीं था, कोई उसको कवर नहीं कर रहा था, ही वाज ओपन, आई थिंक शुड हैव स्कोर्ड दैट वन। और भी उसके अलावा हमें काफी चांसेस मिले टू स्कोर। आई थिंक वी हैड 28 शॉट्स ऑन गोल, व्हिच इज अ हाई नंबर, और हमारा एक्सजी इट वाज 4.07, और इतने एक्सजी के साथ यू एक्सपेक्ट दैट मे बी वी शुड बी स्कोरिंग लाइक 4 5 6 गोल्स इन दैट मैच, एज कंपेयर टू चेल्सी जिसका अराउंड मेरा ख्याल है 1 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 1.4 आई थिंक था। तो काफी अच्छा मैच रहा, एंड इट वाज नीडेड बिकॉज
मीडिया हैड रिटन अस ऑफ, और जर्नलिस्ट को भी बैन किया गया, जो कि फजूल अफवाहें जो है वो मीडिया में फैला रहे थे, और 50% ऑफ द ड्रेसिंग रूम जो है वो लॉस कर दिया एरिक टेन हैग ने, जिसको कल मैकटोमिने ने आफ्टर द मैच he said that it is because of the Erik Ten Hag training sessions and the light training sessions. It was refreshing and everything. So I think players are all in for Erik Ten Hag, and yesterday it was all visible that which players want to play and which players are the problem. Uh, Second half में आई थिंक वी वर ऑल ओवर चेल्सी, उनको कुछ खास चांसेस नहीं मिले फर्स्ट हाफ में। इट लुक लाइक एंड टू एंड गेम थी काफी ज्यादा। हमारी मिडफील्ड बहुत ओपन हो रही थी, एंड मिडफील्ड वाज ओपन बिकॉज वी जस्ट ओनली हैड अमराबाद इन दैट सेंटर मिडफील्ड। मैकटोमिने वाज वेरी हाई अप द पिच, वो प्रॉपर प्रेसिंग गेम कर रहा था, और इसी वजह से उसको चांस मिला इनसाइड द बॉक्स, और उसने फिनिश भी किया। फिनिशिंग आई थिंक मैकटोमिने की जो फिनिशिंग है ना, इट इज एज पर एनी गुड स्ट्राइकर इन द लीग, और इसी वजह से वो इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड का टॉप स्कोरर भी है ओवरऑल भी, with 6 goals, and he has 5 goals in the league as well, more than Julian Alvarez or Darwin Núñez for Liverpool. So McTominay is really scoring for United, और I don't know उसको मिडफील्डर किसने बनाया है, ये मैं बहुत दफा कह चुका हूँ। He is a good striker, maybe a center forward behind a striker. His good position, and that position suits him as well. I think in the midfield it doesn't suit him. वो कोई creative midfielder वाला रोल अदा नहीं करता। ही इज गुड एट प्रेसिंग, ही इज गुड एट रनिंग, पोजीशनिंग वाइज वो अच्छा है, और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो वो जिस पोजीशन पे इस वक्त खेल रहा है, सो आई थिंक ही कुड बी मूव्ड हायर अप द पिच, एंड वी कुड हैव अ डबल पिवट इन द बिग गेम्स। तो सेकंड हाफ में भी एक बहुत प्यारा गारनाचो का क्रॉस, और मैकटोमिने ने वो फिनिश किया विद हिज विद अ ब्यूटीफुल हेडर, which gave us 2-1 lead, और 2-1 के बिल्कुल बाद ही McTominay could have scored his hat trick as well. So I think it was a very, very, very good game from McTominay, not as a midfielder, but as a finisher, as a proper finisher. Amrabat की बात कर लेते हैं। Amrabat was, I think, lethal in the second half specifically. बहुत बहुत जबरदस्त, और जिस तरह चेल्सी की मिडफील्ड को हाईली रेट किया जाता है, आई थिंक इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, दे हैव स्पेंट हाई अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर मिडफील्डर्स, सेंटर मिडफील्डर्स, एंजो फर्नांडिस एंड काइसेडो, जिस पे हम भी लिंक थे। सो आई थिंक उनको अकेले अमराबाद का हैंडल करना, आई थिंक दैट showed that how good Amrabat was in that second half as well. So I think overall, a brilliant game. Should have scored more. Bruno Fernandes, I think he worked his socks off. वो बहुत भागा है। बैक ट्रैकिंग उसने बहुत ज्यादा की है, बॉल रिकवरिंग उसकी बहुत अच्छी थी। गारनाचो, आई थिंक प्रॉपर विंग प्ले उसको हमें नजर आया, हाउ द लेफ्ट विंग शुड बी ऑपरेटिंग, ड्रिबलिंग, क्रॉसिंग। आई थिंक उसने जितने क्रॉसेस कल दिए, तो पता लग रहा था कि भाई कोई खेल रहा है, कोई चीज हो रही है। So I think that we were missing in the previous games. The players worked really hard, and I think that is what Manchester United is all about, and that is what fans want to see. आप खेलो, आप प्रॉपर खेलो, आप जान मारो। आई थिंक फैंस को कोई मसला नहीं होगा। Goals will come, assists will come, everything will come, but you have to put in your effort, and you should have the right attitude and the right mentality. और आई थिंक ये जो एक मैच था, आई थिंक that showed what the players are all about. Maguire again, after winning that Player of the Month award, he was absolutely sublime yesterday as well. So I think overall the team performance was really good. Uh, सिर्फ एक जो चीज हमारे पास एक सेंटर मिडफील्ड वाला एरिया है, वो हमें थोड़ा सेटल डाउन करना पड़ेगा। आई थिंक विद कैसेमिरो और माउंट कमिंग बैक, वी कुड बी इन शुड बी नो विनिंग मैचेस इन कंसिस्टेंट, हम कंसिस्टेंट हो सकते हैं। और भाई जबरदस्त मैच, बहुत दिल खुश हो गया। रात के 3 बजे अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस और ये सब हो रहा, तो आपको वैसी खुशी होती है कि आपने नींद ज़ाया नहीं की एटलीस्ट। और बाकी बात रहेगी जो है वो फॉर्म की। आई थिंक इट विल कम गुड विद इंजरीज, इंजर्ड प्लेयर्स कमिंग बैक। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट द चेल्सी गेम।
भाई दिल खुश हो गया, बस सीधी सी बात ये है। और आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। जैसे कि हमने देखा मैनचेस्टर सिटी के पास सिर्फ एक रॉड्री और मे बी केविन डी ब्रुयने आप कह सकते हैं, बट मेनली रॉड्री की कमी थी एंड दे कुडंट इवन बीट एस्टन विला। और सिर्फ 2 शॉट्स ऑन गोल थे उनके पूरे मैच में। सो आई थिंक की प्लेयर्स मिसिंग फ्रॉम योर लाइनअप आई थिंक डेफिनेटली इम्पैक्ट्स योर गेम प्ले ओवरऑल। और ये चीज़ आपको समझने की जो है ना, वो मेरा ख़्याल है फैन्स जो बहुत ज़्यादा उतावले, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, और ये एरिक टेन हैग आउट और ये और वो फलाना-ढिमकाना। So I think they need to calm down, and I think Ten Hag is the boss. He knows how to manage this big football club. I think we are moving in the right direction as well. So that was all about